Welcome to Educational Technique channel. मुझे ऐसी तुम मानक पे एक सुंदर वीडियो जहाँ कि तुम्हारा फिजिक्स रो प्लस टू फर्स्ट ईयर पिला मानकर साइंस जहाँ कि तुम माने बर्तमान पढ़िबा को Let's start the plus two first year science physics topic. The first topic of the physics is units and measurement. Before going through the topic, we have to know first what is physics and what is science. The science is nothing but it is a body of knowledge. Science is a process and science is a product. Scientists do everything systematically by observing, by experimenting with a proper process and get a product. वैज्ञानिक माने वैज्ञानिक पद्धति रे एक निर्दिष्ट पद्धति अवलंबन करिकि से माने परीक्षा निरीक्षा करी एक सिद्धांत रे उपनीत होंती जाके हम प्रोडक्ट हम शेष रे पाई थांती साइंस इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज माने सबु नॉलेज रो मूलत्व होची विज्ञान साइंस इज ए प्रोसेस विज्ञान होची एक धारा जहा कि जे कोनोसी भी प्रोसेस हुए साइंस रे ता एक निर्दिष्ट सिस्टमैटिकली मैनर रे शृंखलित भाव रे करा जाय थाए साइंस इज ए प्रोडक्ट जहाँ भी आमर इनभेंट होची आविष्कार भी होची सबु जिनस पछरे साइंस लुकाहित होकर रही तो देखिबा जो साइंस आम देखिबा जो विशेष ज्ञान जो विज्ञान जो परीक्षा निरीक्षा मध्य जो सिद्धांत में उपनीत हुंती तार ब्रांचेस ऑफ द साइंस आर द फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी एटसेट्रा तो व्हाट इज फिजिक्स बिफोर गोइंग थ्रू द physics topic we have to know first about the physics so what is physics now it is a branch of science which deals with study of nature and properties of matter and energies मीन्स यह हूँ गोटे विज्ञान गोटे शाखा जार अर्थ जहाँ कहार स्टडी को डील्स करी थाए ना नेचर नेचर जोटा कि आमर प्रकृति और प्रॉपर्टीज माने तार गुण ऑफ मैटर और एनर्जी जेकोसी मैटर माने वस्तु बा पदार्थर आमर तार गुण और तार प्रॉपर्टीज कौन रही नेचर प्रकृति कौन रही से विषय रे एनर्जी विषय रे ज्ञान आहरण करवा हूँ फिजिक्स तो फिजिक्स इज नथिंग बट इट इज ए स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड तो व्हाट द ओरिजिन ऑफ द फिजिक्स फिजिक्स इज ए वर्ड व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्सन फुसिके जाके नॉलेज ऑफ नेचर it is derived from the physica that is the Latin word the physical body and in English the physics is derived from physics the physical things the father of physics is Galileo Galilei the modern physics of the modern father of the physics and the first father of the physics is Isaac Newton mother of the physics is Marie Curie the seven branches of physics are mechanics thermodynamics optics vibration and waves electromagnetism relativity quantum mechanism the mechanism what do you mean by the mechanism deals with relates with explains with the motion and its causes thermodynamics deals with the heat and the temperature optics it deals with light lens mirror and colors vibration and waves is related with the spring sound pendulum electromagnetism is related with electric and magnetic area relativity deals with the velocity of the bodies opposite direction or in the same direction quantum mechanism refers to rays of the lights so what are the types of the physics the classical physics or modern physics classical physics deals with mechanics electromagnetic thermodynamics or optics and modern physics deals with the microorganism whereas classical physics deals with the macroorganism the modern physics deals with the microorganism or little things like electron proton and which are not seen by us the physical world the world surrounding us that is all living non-living natural or man-made things where we live physically depending upon them आम चतुर्पार्श्व जहाँ देखुं जहाँ भी आमर अच्छे जीवंत निर्जीव प्रकृति
कृत्रिम प्राकृतिक जहाँ भी आम देखुं जो आम फिजिकाली आउ मेंटाली सब बड़े अन्य टाइप डिपेंड करके आम चली दैट इज द फिजिकल वर्ल्ड इन जहाँ भी आम पढ़ले एतिके ये हूँ जस्ट फिजिक्स टॉपिक रो इंट्रोडक्शन let's start the topic of the physics. This is the first topic of the physics, units and dimension. Physical quantity. For what is physical quantity? Now, any quantity used for quantitative description of a physical phenomenon is called physical quantity. Means एनी क्वांटिटी माने जेकोसी विषय वस्तु बा जिनिस हो जोटा कि यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन अर्थात परिमाणात्मक जिनस को बुझाइबा पई जो फिजिकल बा भौतिक फेनोमेनन टी यूज होता है सेटा को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते ता कहबा को गले शॉर्ट रे जे हमर जहार परिमाण को मपा जाई परिबो ताहा को हम फिजिकल क्वांटिटी कहिथांती लिखा एनी क्वांटिटी यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फिजिकल फेनोमेनन अर्थात जो क्वांटिटी को आम कौन करिथांती ना क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल फेनोमेनन भौतिक पदार्थ को परिमाप करबा पई व्यवहार करिथांती ताहा को आम कौन कहते ना फिजिकल क्वांटिटी कहिथांती एनी फिजिकल फेनोमेना व्हिच इज मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी अर्थात जो क्वांटिटी जहाँ जो भौतिक पदार्थ को मपा जाई पारिबो परिमाप करा जाई पारिबो ताहा को आमे फिजिकल क्वांटिटी कहते जदि मनकर भल पाइबा स्नेह श्रद्धा बासना ये सब को आमे मापी पारिबा नहीं तेणु दिस आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी बट व्हिच इज मेजरेबल इज दैट quantity is called as physical quantity. For example, time can be measurable in means of minutes, seconds, hours, and weight means of kg, gram, length meter, kilometer, velocity जो कि meter per second, temperature degree Celsius, Kelvin, and these quantities are measurable by other things. So these are the physical quantities. So what are the types of the physical quantities? These are two types of the physical quantities, a fundamental quantity or derived quantity. The fundamental quantity, what is fundamental quantity? The quantity which is expressed by itself. It cannot can't take the others help to express. ताने कौन बुझले ये क्वांटिटी गोटे क्वांटिटी जीए निजे द्वारा एक्सप्रेस हो पारिबो बा कहार सहायता न नेकी निज द्वारा जो क्वांटिटीटा मपा जाई पारिबो बा कहार सहायता न नेकी निज द्वारा एक्सप्रेस हो पारिबो दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी द्वारा ये एक्सप्रेस हुए नहीं जे निजे द्वारा एक्सप्रेस होता है दिस इज द फंडामेंटाल अर्थात मौलिक क्वांटिटी कहते अर्थात मूलदुआ जहाँ अन्य परिमाप पाई अन्य विषय वस्तु बा अन्य जिनिस को परिमाप पाई एहार साहाय्य नि जाए ये कहार साहाय्य नि ना यह मूल क्वांटिटी बा यह हूँ मूल जिनिस जी कि जहाँ साहाय्य रे कि अन्य जिनिस मपा जाई पारिबो किंतु ये कहार साहाय्य नबनी से क्वांटिटी व्हिच इज एक्सप्रेस्ड बाय इटसेल्फ निजे निज द्वारा उच्चारित हो पारिबो सॉरी जमिति भावल जमिति निजे निज द्वारा उच्चारित हो पारे इस निजे निज द्वारा मपा जाई पारिबो मापिबा पई एक्सप्रेस हेबा पई ये कहार सहायता नब नाही एग्जाम्पल ने भल से बुझीपर से फंडामेंटल क्वांटिटी को आम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अच्छी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को आम बुझा तो बिफोर गोइंग थ्रू द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी वी हैव टू नो द व्हाट इज यूनिट्स और व्हाट इज यूनिट इज नथिंग बट ए डेफिनाइट अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन एज इट्स यूनिट तामाने गोटे फिजिकल क्वांटिटी गोटे भौतिक जिनसर गोटे डेफिनाइट अर्थात प्रकृत एमाउंट माने परिमापटा मापिबा को आम यूनिट बोली कही था ए डेफिनाइट एमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए डेफिनाइट एमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन एज अ यूनिट तो कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट luminous intensity amount of a substance
The length refers to the length unit is meter, mass unit is kg, gram. This is the SI or MKS unit of that fundamental quantities. Time is expressed through second, temperature expressed to Kelvin, electric current is expressed through the ampere, luminous intensity candela, and the amount of a substance मापिया परमाणु आउ अणु केतोटी अछि मापिया तो मोल तर एही माने होउचंती हमर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज तापर नेक्स्ट देखिबा तो क्वांटिटीज आर टू टाइप्स उठा होची फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज तो नेक्स्ट we can describe now the what is derived quantity. The derived quantity which are derived in terms of fundamental quantities are known as derived quantities. ता माने जो क्वांटिटीज गुडी को जो जिनिस गुडी को जो विषय वस्तु गुडी को डिराइव करि परिबा इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज अर्थात हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज रूप रे ताको हमें रूपांतरित करि परिबा अर्थात with the help of a fundamental quantity the derived quantities are expressed. तो फंडामेंटल क्वांटिटी मानक सहायतार ही derived quantity एक्सप्रेस हेई पारिबो. derived quantity contain the which are derived in terms of a fundamental quantities रो टर्म्स मानक माध्यम रे ये प्रकाशित हेई परिबो. For example, velocity, force, acceleration, etc. Velocity, as you know, the velocity is the displacement by the time. Displacement is expressed through the length and time to time. The length for L and time horothiparu a time to the power -1. The velocity is expressed through the fundamental quantities that are length and time. Systems of units: CGS system, FPS system, MKS system, and SI system. CGS, C for centimeter, G for gram, S for second, F for foot, P for pound, S for second, M for meter, K for kilogram, S for second. SI है international system. There is 7 fundamental unit and 2 derived units नेके एटा करा जाय छै. तो नेक्स्ट वीडियो रे मोर पय नै आसीबी ए systems of the units. Systems units रे vividly पढिबा what are the dimension, what are the units, and how we relate the units with the dimension of the derived quantity. तो देखो ए वीडियो रे आमे जहा भी आलोचना कले अलगा मध्य बहुत हमर अछि जोटा कि हमर कॉम्पिटिटिव तो बहुत जगह रे जो वीडियो मेकिंग लोक माने करूछंती ए बहुत वीडियो रे देखिबा को मिलछि जे से माने भी कलापटर लेखि कि बुझौछंती तो से माने पाखरे सब किछि अवेलेबल अछि कारण ताको टीम बहुत ग्रो ही जाइछि. तो आपण मानकर सहायता बहुत गुडे लाइक सब्सक्रिप्शन मते बळ जगेइबो जहा द्वारा मो कौन करी नहीं भली निजे परिश्रम करी तुम मानक नोट लिखि आनिबी नोट लिखिकी बुझे देबी जहा फल से नोट को देखी तुम्हें माने कौन करिवो स्क्रीनशॉट मारिकी एतरे नोट मेकिंग मध्ये तुम्हें माने करि परिबो एवं से नोट को देखी प्रिपेयर हे परिबो. जदि हमें ब्लैक बोर्ड लेखिबा ताको बुझेबा ताको सो मच टाइम इज नीडेड बट द स्मॉल बा इज अल्प समय भितरे हमें अधिक पाठ को केमिति आनिकी थोइबा सेथिपई मु एभली आगुतरा लिखि दउची जहाँफल बुझेबा पाई मते अधिक समय मिलुची एवं तुमे माने स्क्रीनशॉट मध्ये मारि पारे तुम माने को सुविधा हेबो. तेनु या परे हमें नेक्स्ट केमिस्ट्री रो वीडियो नै के आसीबा तापरे मैथमेटिक्स तापरे बायोलॉजी तापरे इंग्लिश ते भली समर वेकेशन समय को आमे अजथार नष्ट न होबा को देई या को आमे आस्ते आस्ते करी पढ़ी के सब विषय को सारिबा. तो यह थिला हमर विषय वस्तु जहाँ तुम माने बुझी पारि ना हो ताहा तुम कमेंट बॉक्स रे पठाइबो जहाँ थळे कि एवं नंबर टे देई दबो मु तुमको व्हाट्सएप रे पठाई देबी तुमको जहाँ भी प्रॉब्लम थिबो ताहार पीडीएफ हो बा स्क्रीनशॉट वाला जो मेसेज. तो रहुची धन्यवाद. समस्त सुरक्षित रहंतु घरे रहंतु कोरोना रक्षा पांतु. टेक केयर.